Good evening, students. Welcome back to another class of Business English. And in today's class, we are going to discuss about job application. इंटरव्यू देना एक अलग प्रोसेस होता है, लेकिन इंटरव्यू से पहले हमें अपने रेज्यूमे के साथ साथ कवर लेटर का प्रिपरेशन भी करना आना चाहिए. So whenever we are talking about the job application, we should understand that it is done at three different phases. What we are going to understand here is job application लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कब क्या प्रिपेयर करना चाहिए और कब किसे अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. So when we talk about the first step, that is prepare yourself. This we have discussed at a length when we were discussing about the interview technique and the preparation. The most important thing is you should identify, are you writing a resume or a curriculum vitae? And as you are willing to apply for the job post of the corporate level, so you do prepare your resume. And while preparing your resume, not to forget, you should include your personal details, you should include your educational qualification, work experience in case if you have any kind, the projects, the internships that you might have done. Please do mention about certain references with which they can contact, the person can know more about you and your details. Also, don't forget to mention that the skill sets that you are having, you should highlight your unique selling proposition, the kind of skills that you are born with, that is the talent, and sometimes we do hone them, we enhance our skills. So what are the skill sets that we have developed? So please identify the skill sets that you are skilled up with, and then do mention about them the same in the resume. Step number 2, find out about the employer. That is, do identify the details related to the organization, what kind of organization it is, what is the job profile, what are the requirement of the organization, and then accordingly what is it that they are looking forward. ये हमें कैसे पता चलेगा? Every company, before sharing the requirement, the position, they also mention along with the position the description of the job. व्यक्ति जो भी वहां पर उस काम के लिए असाइन किया जाएगा, जिसे हम हायर करेंगे, वो वहां पर उस व्यक्ति को किस तरह का काम दिया जाएगा, उनसे क्या क्या करवाया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया जाता है कंपनी के द्वारा, जिसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है. सो यू शुड नो what is the job description, what is the deadline by which you can send your resume or CV, and also what are the procedures of following it. Say for example, if you remember, there was the job description that was shared related to the internship, in which you had to create your video related to yourself, and then you have to post that video link so that the person can know more about you, about your communication skill, about your skills, about your interest areas. So there are different companies which will be calling for the different kinds of resumes, and at the same time you should also know the pro forma, the ways in which the interview can be conducted. Not to forget, on Tuesday, it was very clearly detailed that when we discuss about the interview process, it's not necessary that every time you are going to appear for face-to-face interview or interaction. कई बार टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, कई बार एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, उसके बाद जीडी हुआ और उसके बाद फाइनली फेस टू फेस राउंड होता है. सो प्लीज आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस. अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. डू अ बेटर रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कब एस्टैब्लिश हुआ, वहां के सीईओ फाउंडर कौन है, उसका नेटवर्थ क्या है, वहां पर किस तरह के रिक्वायरमेंट के बारे में दिया गया है, उन सारी चीजों की जानकारी आपके पास होना चाहिए. Finally, you start writing the job application. So when we discuss about writing the job application, it will be like preparing your elevator speech. कौन से ऐसे चीजों को लिखकर मैं अगर अपने कवर में लेटर में डालता हूं या डालती हूं तो मुझे एम्प्लॉय के तौर पर हायरिंग प्रोसेस में आसानी होगी और एम्प्लॉयर मुझे जरूर ही चूज करेगा, इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएगा. सो प्लीज आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर मेंशन्ड इन जॉब डिस्क्रिप्शन that you can connect in your cover letter. While writing the cover letter, please understand that always try to answer the questions that are raised in the job description. So if you can identify that, certainly you will be able to write a relevant and interesting cover letter.
Finally, check for the proofread and the spelling errors, no grammatical errors while writing the cover letter. The email should be written in a proper way. The letter should be drafted in a proper manner. Always remember the letter, whatever we will be writing, will be divided into 3 different paragraphs. The first one will talk about the purpose. The second would be talking about you as your personality, what kind of personality you have. And third, the conclusion, what exactly you are looking for. So the 3 paragraph rule should be applied even here. As I said, please remember, whenever you are writing any job description, it is very important to attach your resume. If you do not mention, if you do not attach your resume and just mention about it in the cover letter, there will be mismatch. So therefore, always include either the resume or curriculum vitae as per the requirement of the organization. फाइनली देयर इज अ चेकलिस्ट, इसको हमेशा याद रखना है. पर्सनल डिटेल्स जरूर मेंशन होना चाहिए. मान लेते हैं आपने इंटरव्यूअर को कवर लेटर दे रखा है और उसमें आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही नहीं. मेल के थ्रू आप रेगुलरली अगर उनके ईमेल को नहीं चेक करें, शायद वो आपको मेल ना करे, आपको फोन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो अपने पर्सनल डिटेल्स को मेंशन करना ना भूलें. प्लीज रिमेंबर, स्पेलिंग एरर्स नहीं होना चाहिए ईमेल एड्रेसेस में. अगर आपने गलती से भी गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया तो वो लेटर राइट पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगा. सारे इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फिल्ड होने चाहिए. इंफॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हैं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होना चाहिए. और रेज्यूमे का जो कॉपी है वो अपडेटेड और लेटेस्ट वन होना चाहिए. There are certain things that you have to keep in your mind. Always remember, you should write a proper way of, or you should have a proper understanding of writing the cover letter. Before sending the button that is send, check for all the important information that you have mentioned. Offline और online दोनों में थोड़ी बहुत differences होती हैं इंटरव्यू प्रोसेस में. ऑनलाइन में ये देखा जाता है कि आपके पास ऑफलाइन के अलावा वर्चुअल एटिकेट भी होना चाहिए. आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम या गूगल मीट या जूम या गो टू मीटिंग या सिस्को वेबएक्स, इन सारे प्लेटफॉर्म की जानकारी होनी चाहिए. इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन फेस टू फेस, आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, और आप वहां पर अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं. लेकिन वर्चुअली अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन करना होता है तो आपको रेज बटन पर पहले क्लिक करना है. Once when you click on the raise button, when the icon raise button is highlighted, the interviewer will definitely ask you what is exactly that you want to ask, and then you can definitely share the question. Please remember, the resume and the CV, as I said, it should be updated. It should not be old one. You can have both the electronic version of the resume and CV, or it could be in the hard copy, that is the soft copy as well as the hard copy. Please understand that there are certain ways of writing your resume, so adopt the latest version of writing the resume. Whatever you are mentioning, like the interest and hobbies, great achievements or accomplishment, try to connect them with the requirement of the organization, because that is going to connect you with the person, with the customer or with the client or with the employer. Also remember, there are different additional information which you can share it, like which can be related to the certificates that you have obtained through webinars, the kind of workshops that you have attended during the session, wherein you were participating during the BBA program with ISM Patna, or offline, like you might have done certain certification courses related to business writing, email writing, or could be related to graphic or SEO, digital marketing, etc. So do mention about all the other additional information. As I said, these days, the first round is generally the telephonic round of interview, which is commonly applied by the interviewer. So while interviewing all and while giving a telephonic round of interview, what are the common things that you have to keep in your mind? Please remember, there should be a proposed timeline. कई बार हम ऐसे टाइम में, ऐसे पोजीशन पे होते हैं जब हम टेलीफोनिक राउंड नहीं दे सकते, तो इंटरव्यूअर के अगर कॉल आता है तो उस टाइम पर अननेसेसरी रॉन्ग आंसर्स देकर अपने चांसेस को लिमिटेड फॉर्म में नहीं रखना चाहिए. हमें क्या करना है, देखना है कि हम किन से बात कर रहे हैं, क्या हम एक सही जगह पर बैठे हैं या नहीं. In case if we are in our classroom and there is a telephonic call that you have received from one of the employers, do take another timing, or you can say that, excuse me sir, as I'm attending my class, can I give you a call back at some other time, or
कैन आई मेक अ कॉल आफ्टर एन आवर? अगर आप क्लास के बाहर आ सकते हैं, take a permission that sir allow me to come out of my classroom so that I can answer your call or I can respond to your answers in a proper way. There are ways of answering to the telephonic call, but don't कट इट अब्रप्टली. जैसे डर जाते हैं कई सारे स्टूडेंट्स को, लगता है ये तो एम्प्लॉयर का कॉल है, मैं क्लासरूम में रहकर कैसे उनको जवाब दूं, और वो अचानक से फोन को काट देते हैं. ट्रस्ट मी, अगर आप फोन को इस तरह से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो कभी भी आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा. इससे अच्छा होगा कि आप उनसे परमिशन सीख करें. आप उनसे कहिए कि मैं भी क्लासरूम में हूँ, अटेंड कर रहा हूँ अपना क्लास, तो क्या मैं आपको दोबारा से कॉल बैक कर सकता हूँ, और उनसे 1 से 2 मिनट का टाइम लीजिए. प्लीज रिमेंबर not to forget good morning, good afternoon, good evening based on the time. If you just say hello, कौन बोल रहा है, that looks very awkward. You should be always courteous and polite while answering to any of the telephonic call. चाहे वो इंटरव्यूअर का हो, चाहे वो किसी फ्रेंड का हो, किसी फ्रेंड के फैमिली मेंबर्स को, या आपके खुद के फैमिली मेंबर्स का. So always understand, be very courteous, be very polite while answering any of the telephonic call, because you don't know who is going to contact you from the other hand. किसी का भी वो कॉल हो सकता है. At the time of receiving any of the telephonic calls, always understand it is very good and appreciated if you are very courteous and polite while answering to the call. And by greeting the person, it shows that how good you are in your human nature or even in your mannerism. You can have a telephonic mock round by conducting it either by the career advisors or by the faculty mentors of your campus. You can schedule a mock interview even with your friends. This can help you in boosting your confidence level, and at the same time you can also do a rehearse of it. Not to forget, even at the end, do mention thank you very much for sparing the time. While having the conversation, write down the questions that are asked by the interviewer so that you can answer it, you can think upon it, and you can answer it in a proper way. Keep a copy of resume with you so that you can answer according to the requirement of the organization. Make a note or take a note of all the important information that the company or the personnel is giving to you while conducting the interview. If you have any questions that you would like to clarify, at the end you can also ask the questions. But please understand, do not ask direct questions wherein you are challenging the position of the interviewer. All right, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, और आपके पास जो नॉलेज है वो लिमिटेड है. हमें दूसरों के वीकनेसेस के ऊपर हाईलाइट करते हुए क्वेश्चंस नहीं रेज करना है. अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो उससे रिलेटेड अगर आपको आंसर मिला है तो उनको आप थैंकफुल होते हुए पोलाइट वे में थैंक्स कीजिए. अगर आपके पास कोई आंसर्स हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता पाए और जिसका आंसर आपने बाद में खोजा है, आप चाहो तो वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं. As I said, there is a difference between resume and curriculum vitae. Always understand, resume is to be used by those people who are applying for the position of the corporate level. Whereas when you are willing to enter into the academics, it's better, or it is advised to write the curriculum vitae. Even if you're a fresher, you should always remember that you are writing a curriculum vitae if you are looking for a position in the academics or in the education segment. So while writing the resume, make sure that you understand the job description about the industry and the organization very well. Mention about the accomplishment, achievement, because these all talks about your personality traits. It could be related to your communication skill, it could be related to leadership quality, it could be related to your lateral thinking, your ability to manage the team, your ability to manage the work pressure. So there can be different things which you can highlight through your accomplishments and achievements. Also talk about the list of awards, honors, and the recognition that you have received recently. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्लास 1 में कुछ अवार्ड और प्राइजेस जीता था और अब बीबीए में आप उसके बारे में बता रहे हैं. Always mention something which is latest and which is more likely to be of interest by the employer. Also, do mention about the latest information in the resume, because resume is the first thing that is reaching to the employer before you are going to have the interaction with the employer. Proofread it, no spelling errors at all. If there are spelling errors that are going, these will definitely reduce the chances. So also, as I said, that there are frequent list of questions.
So I hope everybody might have gone through the list of questions that are there. Now let us do a mock drill of all these with certain candidates who are keen to appear for a small mock drill to understand whether you people are really working according to the requirement of the organization or not. Quickly in the chat box, you can share the information in the chat box if you are really keen to participate in a mock interview session right now. Who would like to take part? None? Okay, so let me give you some time. There are certain frequent questions which are there in the job application. Take a day or two. Let us do this on Sunday. By Saturday, you have to send me an email requesting for the mock drill. जो लोग अपना मॉक इंटरव्यू करवाना चाह रहे हैं वो सैटरडे तक ईमेल मुझे भेजेंगे. मैं आपको एक टाइम स्लॉट दूंगी संडे के लिए. अकॉर्डिंगली संडे के दिन अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग टाइम दिया जाएगा और ये टाइमलाइन और ये जो लिंक होगा वो सिर्फ उसी कैंडिडेट के लिए होगा, किसी और के साथ आप शेयर नहीं करेंगे. ठीक है ना? तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप हो जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हमें इंटरव्यू को प्रिपेयर करते समय. और उससे पहले पहले सैटरडे जब आप मुझे ईमेल करेंगे, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप एक रफ रेज्यूमे जरूर बनाकर मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपने रेज्यूमे राइटिंग के द्वारा क्या समझा है क्या नहीं. आज मैं आपको सेशन खत्म होने के बाद एक सैंपल रेज्यूमे का कॉपी दूंगी. जो इसमें मेंशन है नोट्स में ये बहुत ही पुराना आउटडेटेड है. जो आज के डेट के हिसाब से जो लेटेस्ट तरीके का रिज्यूमे अप्लाई किया जा रहा है वो मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आप उसी अकॉर्डिंगली अपना रिज्यूमे बनाकर मुझसे शेयर करें. ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, ये कंपलसरी सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अपने इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव करें, होन करें, ये एक तरह का वर्कशॉप बेस्ड होगा जहां पर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी और आप मुझे आंसर करोगे और ये रिकॉर्ड किया जाएगा. ठीक है ना? किसी तरह का क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉब एप्लीकेशन जो हम लोगों ने ट्यूसडे के दिन किया था और आज के दिन किया है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं.